So hello everyone, today we are going to cover BFS. It stands for a bit first search. Okay, so what is a BFS? What is a BFS means BFS is a graph tree traversal technique that explore nodes level by level. Means जिसे हम BFS कहते हैं एक ग्राफ या ट्री ट्रैवर्सल टेक्निक है. BFS एक ग्राफ या ट्री ट्रैवर्सल टेक्निक है जिसमें नोड्स को लेवल बाय लेवल विजिट करते हैं. Here is a visit all neighbors of a node before going deeper. Okay, in simple word, goes wide first, then deeper. For example, to explain to in here there is two things. Okay, so a first visited A, then visited 2, and then visited 4. Means visited level by level. Okay, level by level हम visit करते हैं. Don't go deeper. Okay, और उसके बाद आगे जाते हैं. देन 2, then again 2 all level by level, then 5 and 6. These are the neighbor of the 2. So don't go 1 2 3 5. Don't this follow this technique. Follow DFS, depth first search, and BFS covers all neighbor elements. Okay, in a real life example. ओके, सोचिए आप एक क्लासरूम में खड़े हो. पहले आप फर्स्ट रो के स्टूडेंट से बात करोगे. सपोज वी आर विजिटेड इन सपोज वी आर स्टैंडिंग इन अ क्लासरूम एंड देर इज अ रो. ओके, सो फर्स्ट विजिटेड फर्स्ट रो के स्टूडेंट्स के बात कर रहे थे, फिर सेकेंड रो के स्टूडेंट्स, देन थर्ड. means level by level visited in a BFS. There is a graph traversal, tree level order traversal, finding shortest path in unweighted graphs, and social network. Friends or friends of friends. वेब क्रॉलिंग. शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए BFS यूज़ करते हैं. सोशल मीडिया में फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ढूंढने के लिए वेब क्रॉलिंग जैसे एप्लीकेशन में वी यूज्ड BFS. ओके, विच डेटा स्ट्रक्चर यूज कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है BFS में? क्यू और डेटा स्ट्रक्चर क्यू में आता है, वही पहले बार जाता है. मीन्स क्यू का रूल होता है इन BFS. क्यू का रूल होता है, जो पहले आता है वही पहले जाता है. इसी वजह से BFS लेवल बाय लेवल काम करता है. इसी फर्स्ट विजिटेड नोड प्रोसेस फर्स्ट, दैट्स वाई BFS फॉलो लेवल बाय लेवल. BFS algorithm, here is a BFS algorithm. In easy way you can understand how BFS work. Okay, start from a source node. Okay, source node से start करते हैं. इस mark it as visited. Okay, इसको हम marks कहते हैं visited. Push it into the queue. 2 minutes. Okay. You can understand with the help of this diagram. Okay, first start from a source code. Okay, so suppose we start from 1. Okay, start from a 1, then it's push it into the queue. Suppose here is a queue. So first visited 1, push it into queue. Okay, then while queue is not empty, okay, remove front node, print process it, visit all unvisited neighbors. 1 is a visited. Okay, now 1 is a, there is a index number 0 1
2, 3, and so on. So first we visited 1, so true. Then 2, push it into one to front, is a now 2 is a true. Then 4, 4 is a visited. So mark them visited and push into queue. Mark them visited and push into queue. This is a BFS algorithm. Here is an example. First source node is a नोड 0 से स्टार्ट कर रहे हैं. नोड 0 के नेबर से 1 और 2. सो उसके बाद 1 और 2 के नेबर से 1 का नेबर है 3 एंड 2 का नेबर है 4. सो BFS ट्रैवल ऑर्डर इज 0, देन 1 एंड 2. 1 का विजिट नेबर है 3 एंड 2 का नेबर है 4. ओके, देन डोंट फॉलो ब्रेथ फर्स्ट सर्च. हियर इज अ pseudocode. Create queue, mark start as a visited, queue dot push start. Okay, while queue is not empty, queue dot front and then queue dot pop, and plug in print node for each neighbor of a node. If not visited, marks visited and queue dot push neighbor. सबसे पहले हम एक queue बनाते हैं. In our pseudocode we can understand. Okay, create a queue. ओके, फ्रंट नोड को रिमूव करते हैं. फ्रंट नोड को जो भी है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. उस नोड को प्रिंट करते हैं. फर्स्ट रिमूव देन प्रिंट. उसके अनविजिटेड नेबर्स को विजिटेड मार्क करते हैं. इफ दे आर अनविजिटेड, विजिटेड. फर्स्ट रिमूव then push and then marks visited. You can understand for animation in a okay, push first remove then print करते हैं and then visitor mark करते हैं. Okay, here is a simply code for adjacency list. Q dot front, Q dot neighbor, and int main means you follow 5 layers. It's very simple. So here is a BFS for a tree level order traversal. If root not equal to null and then all. Okay, so what is difference between the BFS and DFS? BFS uses queue, DFS uses stack. Level by level in BFS, in DFS goes step fast. In BFS shortest path, there is no shortest path in DFS. Okay, DFS is used for a puzzle solving. Okay, now you can see for animation. With the help of animation you can understand easily. Okay, so first visited is a 0. Zeros neighbor is a 1 and 2. Now visited 1 and then 2. Now 1 visit 1 have a 2 chance. Then now 1 has a 2, 0 and 3. 2 neighbors 0 and 3, but 0 is already visited, then 1 visited to 3. Here you can see 1 have 2 option, 1 and 2 visited, then 1 have 2 options 0 and 3, but 0 is already visited, you mark visited, then go through move to 3. Then 2 have again 2 neighbors 0 and 4, but 0 is already visited, you move 4 again. Then 3 have 2 visited, 2 node neighbor node 1 and 5, but 1 is already visited, go to 5. And 4 has already 2 and 5, 5 is already visited. So there is a BFS bed first search. You don't follow 0 then 1 then 3. You don't go in that path. You go first neighbor level by level. Okay, that's it for today. Please like, share and subscribe. Thank you.